का शपथ, राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह जो चल रहा है उससे वो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर एक नए कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है बतौर राष्ट्रपति। 45वां राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कार्यकाल अपना पूरा किया था। उसके बाद जो बाइडेन को ये जिम्मेदारी मिली और अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और खास बात यह कि मात्र 35 शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। प्रदीप गुप्ता जी पूर्व राजदूत हैं, सुरेंद्र कुमार जी फाउंडर प्रेसिडेंट इंडो अमेरिका फ्रेंडशिप एसोसिएशन। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ खास मेहमान अमेरिका से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। And defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith. That I will bear true faith. And allegiance to the same. And allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation. Without any mental reservation. Or purpose of evasion. Or purpose of evasion. And that I will well and faithfully discharge. And that I will well and faithfully discharge. The duties of the office. The duties of the office. On which I am about to enter. On which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Vice President. उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है जेडी वेंस ने। आप देख रहे हैं यंग उपराष्ट्रपति के तौर पर आप कह सकते हैं। और अब म्यूजिक का कार्यक्रम और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करेंगे। सबसे पहले सुरेंद्र कुमार सर, मैं आपके पास आ रही हूं। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों पर विश्व की निगाहें बनी हुई हैं। बाकी सवाल बाद में, लेकिन पहला सवाल मेरा ये सर कि ट्रंप के 2.0 में भारत के लिए आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ट्रंप तो बहुत से देशों के नेता लोगों के लिए काफी
तो बतौर राष्ट्रपति अमेरिका में फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, और इस बार अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका को बेहतर बनाने की बात जो ट्रंप ने जीत के बाद दोहराई थी, अब सबकी निगाहें उन पर भी होगी। जो 10 पॉइंट्स हैं, खास करके उसमें से एक बॉर्डर पर इमरजेंसी की, जो अमेरिका के बॉर्डर्स हैं उस पर इमरजेंसी की बात इन्होंने कही थी, और अमेरिका को सुरक्षित करना, अमेरिकन फर्स्ट की बात करना। अब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इन बातों पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। हालांकि ये भी खास है कि जो बाइडेन ने डॉक्टर एंथोनी फाउजी और जनाल काक को माफ़ी दे दी है, और ऐसे समय पे ये माफ़ी दी गई है जब डोनाल्ड ट्रंप इस कार्यकाल की शुरुआत कर रहे थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि जिन अधिकारियों ने बाइडेन के गवर्नमेंट में कार्य किया था और जांच, उन सब पर बैठाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी, कहा था कि उन सब की जांच की जाएगी। यानी अब अगले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से एग्रेसिवली काम करने वाले हैं, सबकी निगाहें उस पर भी होगी। और ख़ास बात ये भी है कि जो रैलीज इनकी लगातार रही है उनमें इन्होंने यही बातें कही है कि रशिया का जो वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ, उसे वो ख़त्म करवा देंगे। यानी जो सिनारियो वर्ल्ड पे एक वॉर के साथ जूझती हुई स्थितियाँ थी, उन स्थितियों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से पहल करने वाले हैं, उस पर भी सबकी निगाहें होंगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जो विक्ट्री स्पीच दी थी उसमें ये कहा था ट्रंप ने कि अवैध प्रवासियों को निकालना सबसे पहली प्राथमिकता होगी। खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र सर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, सिर्फ बाकी मेहमानों के पास पहुंचेंगे। मैं ये कह रहा था बहुत से देश में काफी चिंता हो रही हो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत के संबंध उनके कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में काफी अच्छे थे। मोदी जी का और उनका जो है काफ़ी मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। हाउडी मोदी कहिए या उनका नमस्ते ट्रंप में अहमदाबाद कहिए, वो ताजमहल में घूमने गए थे। इसके अलावा जो बायलेटर, देखिए वहाँ पर बाई पार्टीजन सपोर्ट है। कांग्रेस में, सेनेट में दोनों चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ रिश्ते होने चाहिए। 4.1 मिलियन रिच इन्फ्लुएंसर इंडियन डायस्पोरा है, उसकी बहुत इन्फ्लुएंस है। उसके साथ हमारे ट्रेड है, हमारी इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। यहाँ पर ट्रेड के, बिजनेस के, इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट्स इंडिया में, तो अमेरिकन कंपनी चाहेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। दूसरा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, चाइना का आप काउंटर करना चाहते हैं, काउंटर करने के लिए सबसे बड़ी ताकत आपको मिल सकती है, इंडिया से मिल सकती है। तो हमारे क्वाड हो या इंडो पैसिफिक हो या आईमेक हो या I2E2 हो, ये सब में हिंदुस्तान और अमेरिका के साथ संबंधों में काफ़ी प्रगाढ़ता रहेगी। कुछ विषय हैं जिनपे हमारे कुछ संबंध जो है कुछ कठिनाई पड़ सकते हैं, पर मैं समझता हूँ दोनों नेताओं के बीच। मैं आपको रोक रहा हूँ सुरेंद्र जी, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। Justice Roberts, justices of the United States Supreme Court, President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free.
America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country, sunlight is pouring over the entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. And other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. Or more recently, Los Angeles, where we are watching fires still tragically burn. From weeks ago, without even a token of defense, they're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it than any country anywhere in the world. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today, and it will change very quickly. My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history, and I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again.
Thank you very much. That is why each day under our administration of American patriots, we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural, and very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states, and the popular vote, we won by millions of people. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor, but in his honor, we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. Thank you. Thank you. National unity is now returning to America, and confidence and pride is soaring like never before. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting success. We will not forget our country, we will not forget our Constitution, and we will not forget our God. Can't do that. Today, I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. Illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations.
by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. बड़ा फैसला लेते हुए इस अपने भाषण में वो नजर आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौट रहे हैं। कल हर कोई उस वक्त सन्न रह गया जब महाकुंभ में धधकते शोलों में टेंट सिटी घिर गई। आग कैसे लगी, क्या क्या हुआ और योगी फौरन घटनास्थल पर कैसे पहुंच गए, देखिए रिपोर्ट में।